अब बातचीत करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे बैंक ने पेश किए और मुनाफा काफ़ी ज़बरदस्त था, 42% बढ़ा, ब्याज आय भी 20% बढ़ी। हालांकि एनपीए में थोड़ी सी बढ़त देखी गई और मार्जिन भी घटे हैं थोड़े से, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11 क्वार्टर्स में नीचे आ गए हैं। ये क्यों हुआ और आगे क्या रास्ता है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बैंक के सीएफओ वेंकटरमन वेंकटेश्वरन जी हैं। वेंकट सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो थोड़ा एनपीए बढ़ गया, ये क्यों बढ़ा है सर? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। तो एनपीए आपको देखना चाहिए ऐसे कि जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक था 2 ईयर का मॉरेटोरियम 21 to 23 मार्च 23 में खत्म हुआ। एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर whatever was coming out of the repayments out of that, the slippages were high only from that particular restructured book. So the rest of the NPAs was in line with our normal run rate. और जो restructured book का जो NPA देखे हमने वो सिर्फ secured book में आए. So the loss given default is very low. It's just that the 2-year moratorium is complete. They've all come out of moratorium. They've started seeing the repayments. So उसमें थोड़ा सा हमने देखा NPA. Other than that, there is no change in the NPAs or the way the slippages have occurred, and we don't see any concern going forward on that. Okay, अच्छा, गोल्ड लोन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, गोल्ड लोन का तो कोई कुछ नहीं। गोल्ड लोन is secured and as and when we want we can auction it also if it's not repaid. Okay. दूसरा, आपके जो मार्जिन है सर वो भी 11 क्वार्टर के लो पे आ गए, तो क्या ये समझना ठीक होगा कि पीक हो चुके थे इसलिए हुए हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड आपकी बढ़ी है और अब ये वन ऑफ नहीं है, ये एक ट्रेंड है कि अब यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आके स्टेबलाइज होंगे? हाँ, आपको निम के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि लास्ट क्वार्टर जब हमने रिजल्ट्स के बाद गाइडेंस दिए थे, हमने बताया था कि निम्स फॉर FY24 will be a story of two halves. First half में थोड़ा soft plateauing and then it will start picking up in second half. And it's pretty much in line with what we had indicated. We have grown very well in Q1. It's been a very strong start to the FY24 and both advances and deposits have grown very well. But deposit costs is obviously higher than the yield on advances. इसके हिसाब से निम्स जो हमने मॉडल किया था उसके हिसाब से आया है 3.15% है. बट द गुड न्यूज, द मेन पॉइंट टू नोट इज वी बिलीव दैट वी हैव प्लेटोड ऑन द डाउनवर्ड साइड ऑफ द निम्स एंड एक्सपेक्टेशन गाइडेंस ये है कि Q2 में निम्स बढ़ेगा 5-7 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, फिर उसके बाद H2 में और बढ़ेगा. सो we pretty much bottomed out and we should start seeing the reversal of the NIM trajectory from Q2. पूरे साल के लिए आप मान रहे हैं कि 3.15 से ऊपर ही रहेगा? जी बिल्कुल, 3.15 से ऊपर रहेगा. अच्छा, दूसरा 5 to 7 बिप्स फॉर Q2, फिर उसके बाद जो गाइडेंस हमने दिया है कि फुल ईयर के लिए 3.3 दिया है. 3.3 पूरे साल के लिए निम्स रहेगा. ये जो अभी 3.15 है इसमें धीरे धीरे 5 से 7 बीपीएस की सेकंड क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी. वेंकट सर, ये जो क्रेडिट ग्रोथ है आपकी, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, 20-21% की है. और जब मैंने पिछले क्वार्टर बात की थी तो मैनेजमेंट ने हमें बताया था कि वो इंडस्ट्री की बेस्ट क्रेडिट ग्रोथ लाके दिखाएंगे. क्या अभी भी आपका वो ऑप्टिमिज्म बना हुआ है या उससे और ज़्यादा हो सकता है आपका? क्योंकि इंडस्ट्री में जो माहौल दिख रहा है वो तो बहुत तेज़ी वाला दिख रहा है. See, if we want, we can grow even faster than this. But you know that Federal Bank, our risk parameters, and we have a moderate risk appetite. Within this 21%, there will be certain products which will grow at 25, 30, 40% also. But overall, to grow the entire book, advances at 21% is what we have been guiding towards high teens. And given the current outlook of the economy and the opportunities, we still believe
we can grow at this rate for FY24. So ऐसा नहीं कि हमें we can't grow faster, but then it has to be, we have a particular model, and while some of them may say it's conservative, but we believe it holds us in good stead in both good times and bad times. You won't see our credit cost guidance still remains 40 bips around that range for the year. So it's a combination of ensuring that good asset quality, robust growth, and with expanding distribution, we should continue to show improvement in return ratios. वेंकट सर, क्या रिस्क एपिटाइट बढ़ा है क्या बोरोवर्स का, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं, हमारा जो आप देखेंगे कि वी आर लार्जली अ सिक्योर्ड लेंडर, बुक इज लार्जली सिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड का अभी हमारा परसेंटेज है ओवरऑल एडवांसेस में 4% है. सो इवन इफ वी ग्रो दैट, देयर इज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो दैट fast, and we are doing. Our base is small, but even if I grow it at 40-50% for the next few years, still the overall unsecured in our case will not exceed 10% of the overall advances. So we operate within those parameters, and whilst there may be a higher risk appetite of borrowers, but we have our risk parameters, and we go based on that. किस सेगमेंट से सर सबसे अच्छी ग्रोथ मिल रही है आपको? काफी ब्रॉड बेस्ड है ग्रोथ हमारे, जो आप देखिए एडवांसेस का विद इन रिटेल, ऑल द प्रोडक्ट्स विद इन रिटेल, वेदर इट्स बिजनेस बैंकिंग, कोर रिटेल, लैब, मॉर्टगेज, गोल्ड, वी हैव सीन ग्रोथ इन ऑल ऑफ दिस. एंड इवन ऑन द कॉर्पोरेट साइड, corporate and COB commercial banking both have grown very well. So it's a broad based growth across all the product segments. So it's, I would say, firing on all cylinders. अच्छा सर, एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, जो शालिनी वारियर जी वाली खबर आई थी, हालांकि इसका आपने खंडन किया, ये क्या था मामला? Completely speculative. We have issued clarification to the exchange last night. No basis, and it's just a media speculation. ये केवल स्पेकुलेशन है. शालिनी वारियर जी कहीं नहीं जा रही हैं. वो साउथ इंडियन बैंक की जो खबर सुनी थी आप लोगों ने, वो सच नहीं है. वेंकटरमन जी से भी मैंने पूछ के इसको आपके लिए तस्वीर साफ कर दी है. सर, फंड रेज के क्या प्लान है आपके, वेंकटेश्वर सर? जी, हमने बताया था कि इस साल sometime in this year we will be looking at raising capital. जो capital है purely growth capital, और आपने देखा होगा कि our capital utilization allocation is very optimal. We don't go to the market very often. The last capital raise was in 2017, and so opportunities are being evaluated. Board is considering it. So sometime in this FI will definitely look to tap the market. तो क्या कुछ प्लान है क्या कि नेक्स्ट वीक कुछ QIP वगैरह लेके आ सकते हैं? As of now, nothing is finalized, and if there's anything, obviously we'll intimate. बट ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक एक QIP हो सकता है 4,000 करोड़ का? We have enabling a resolution of shareholders to raise up to 4,000 crores, which we took in the last AGM, which is valid. And like I said, all options in terms of whether it's QIP, pref, and or combination is being considered by the board. And whenever an appropriate decision is taken, we will proceed based on that. हाँ, that's fair, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हमने पढ़ी मीडिया में कि नेक्स्ट वीक शायद एक QIP आप कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे के आसपास. तो इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं. मैं भी वही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वही न्यूज़ देख रहा हूँ. तो सच है कि नहीं सच है वो? No, I don't want to comment on media speculation, right? So media is free to say what they want, but as far as we are concerned, all options are being considered. Board will decide the appropriate timing, and then we will. Okay. Proceed. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your views. Thank you so much, sir. Thank you, Neeraj. Thanks. Bye. So फेडरल बैंक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के, और निम को जो चिंता थी, मैनेजमेंट का मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर से इसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, और जो स्ट्रक्चर्ड बुक थी उसकी वजह से आपको NPAs बढ़ते हुए दिखे थे, जो आगे जाते हुए कंट्रोल रहेंगे. छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट चर्चा.